אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. I am your host, Salim bin Muhammad Rafi, and here is my YouTube channel. Today I am going to be talking about something really very serious which I think affects the whole world. I am not someone who will prophesy or will tell you I'm not a fortune teller. I am just going to become straight away with facts. The facts are that unless you get rid of this one single person, his name is Natenyahu, and he has been the longest serving president, but I think he has lost his mind. He is not normal. If you want to assess it, I would request all the Israelis to assess him, with the exception of 5 people whose picture I am putting on there, and see what they said. So it's going to be on the record that what the President of Israel at the moment said, what the Defense Minister said, then you can see that themselves committing, you don't need any evidence to know. And I'm talking to all the Jews, and including Zionists and the ultra-Orthodox Jews, and I think even the Arab or Muslims who are few just left as Palestinian, and either they are member or they aren't member of the Knesset. And I'm addressing to all the grieving mothers who've been burying their young sons and daughters, forcibly inducted into the IDF, and see what they've been doing. See if someone just comes and goes into your house when he's Hamas or he's Hezbollah or he is Houthi or he is Irani. Anyone, or is a Palestinian, or is from West Bank, or is a Jordanian or an Egyptian, and opening your drawer and getting your bra out or your night dress, and it's very happy to show it to the rest of the world that this is what he has done. And getting the people in their underpants, like father, brother, older, scientists, PhDs, doctors, engineers, irrespective of what they are not member of any terrorist group or Hamas, and then intimidating them and see them to make them cry and then blindfold them. I think you can see and decide and yourself. I want you to have a people's court and not spit on your, the Chief Justice, or spit on the judiciary, spit on your Knesset, and spit on the people who are sitting there. And at least these 5 or 6 people, I'm showing you their pictures, and I'll repeat that again and again. Shows you that Israel is above the law. And if you think you can live in the international body and be recognized as an honorable member of the United Nations, then you see for yourself that you don't. I don't want to say to the whole Jews who are living there in Israel, or Israel, that it's an occupier. You are not a state issue, you are an occupier, and it is about time that you accept yourself that you colonized this. You came as refugees, and you were, at that time, Hitler had just left you, you were starved, you had sunken eyes, you were barefooted, you had pot bellies which had just sunken to your spine, and you were given food, you were given water, you were given shelter. And look what you have done to those Palestinians who did this to you. They didn't deserve this. And I'm not going to show you the destruction you have caused to the north, to the south, Rafah, to the center of, and you continuously to do that. Now, when there is a complete, I think the whole of the word is out, all student bodies all across the world are out, all, I think, the sane people everywhere in the world are out, except the few traitors who are people who have blood on them. And these hounds are the one who have already cheated their own, religion, their own nation, and they are the Saudi Arabia, they are the Jordan, they are the Egypt, and that these people have the blood of the UAE and Bahrain. They have blood of all those innocent children and kids. It isn't just limited to you. So at least be sure that the blood of those innocent people you have slaughtered since October, that in the last 11 months, is shared by these idiots. And I'm going to put their picture for you as well, so that you see
the who rules the Jordan, who is in the Saudi Arabia, who is in the UAE, who is in the Egypt, and all of these are paid touts and puppets, and their God is America, United States, as it is for Israel. Alone, you know that you cannot do anything, and you have seen what has happened to your bases, you have seen your ammunition depots, you have seen the whole belt of 180 kilometers of north, I've seen you hundreds of rockets, hundreds of drones and hitting in, and see the fire and see what's waiting for you, and see, read, at least for God's sake, read what you being written, what is being said by your own people, by your own retired generals, own your people who've been chief of the army staff. Look for those who have resigned and left you. Everyone can't be crazy. It's only Natenyahu who is crazy. He is adamant. What the hell is he going to do to have one tower or two or 20 or 200 towers at the Philadelphia corridor? In this day and age, you don't have to get, any missiles or any machinery or anything and smuggle them. There are many ways, and these things can be dropped in the parachute. These things can, reach you. And even technology can be transferred to you. All you need is to send with the Wi-Fi. How are you going to control the air? How are you going to control the satellites? And they will jam all your electronic devices. And you know that Iran has sent now 11 satellites, and what you're talking is going to be heard. So before you are completely destroyed, and as it has been prophesied that either you accept the ceasefire, so bloody hell, get out of that place. Just drag this man out of Knesset, and with that, drag the other 4 or 5 who've been saying that what we have completely blocked their waters, power, and they're proud. You see, look at this. I spit on the face of this man who says that I've stopped food, I've stopped power, I've stopped water going to this, and is calling them animals. Look at that, whether they look like his own son, him, his wife, his daughter, or he looks like an animal. He is an animal, and animal thinks the others are animals. He is looking at his own face into the mirror, and that's exactly how you see the ugly face of Natenyahu. No, you don't have any time left. You've been, by the economists, this has been there. Either you have a doomsday, or you are going to be eliminated. And your own general says that it's only you got 1 year. And if in that 1 year the whole Israel is going to collapse and appear from the map of this earth. This is what you were doing. This is what you want. So if that's what you want, then it's okay. Then let Netanyahu dictate the whole of the Israel. Look, the 7 or 8 million of you who have gathered from all across the world, then those Zionists, whatever he was, so actually they are the scum of the society. The few good one, they can remain then. They have always survived, and they've been ruled there, and they've been like, with hand and gloves with the Muslims, with the Christians, and they have lived together and lived in peace. And if you want peace, and if you want to live with them, then I think you must get rid of these people, and it is about time the whole of Israel. If Bangladesh can do it, if India can do it, if this can happen in the other countries, why on earth you, the Palestinians, you are there? Why you want to call them animals? Why don't you, the Israelis, all those grieving mothers, all those people who have their hostages, who have their brothers and sisters and wives and daughters, still they are in there, why don't you just get rid of this man, and obviously there will be a ceasefire, there will be a deal, and your loved one will be home, and your country will be safe. That's all I can say for you. Otherwise, you look at what's happening and the whole of 180 kilometers of border with Hamas. See Hezbollah, what he's doing, and see what, just dread it, and look, even dream that what is going to happen once the Iran starts to do it. See what Houthis have done in one day, 3 ships they have, and so now next turn is the turn of all those destroyed the Americans have sent, and see, $15 billion spent on that. No, nothing is going to stop them. When you push someone against the barbed wires, and the spikes of the barbed wires get into the skin of that person, and blood starts to come, no matter how weak that person is, no matter how small he is, he'll push you back and kill you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन दिन हुआ है,
और ये पिछले 4 दिनों से जो हमलों की शिद्दत आई है उसमें इजाफा अब बहुत बड़ा हुआ है। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले भी हिजबुल्लाह ने इजराइल की मैरून एयरबेस उड़ा दी थी। इसके बाद इसराइल का आप हाल देख लें कि अब ड्रोन्स आते हैं तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब असल में आज सीन ये हुआ है कि लिबनान की जानिब से हमला हुआ है और इस हमले में जो इजराइल की मैरून एयरबेस जो असल में लिबनान के साथ लगती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी वहां से मिसाइल चीजें आती थी उसको उड़ा दिया इन्होंने, और जो हिस्सा रिपेयर किया था वो भी उड़ा दिया और जो बाकी रह गया था वो भी उड़ा दिया। अब इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि इस बेस को बचाने के लिए इसराइल ने अरबों डॉलर्स लगाए हैं, पैसा लगाया है, तमाम चीजें की, क्योंकि अगर ये उड़ जाती तो फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि इनका ओवरऑल जो डिफेंस पोस्चर है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्दर्न इजराइल की साइड से खतरनाक हो जाता। अब सीन ये हुआ है, ये उड़ा दी गई है। अब आपको पता है कि जो 2 दिन पहले लिबनान ने हमला किया, घर को आग लगी हुई है, वहां पर लोग बुरी तरह, उनका एरिया तबाह हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि मैरून एयरबेस का एक हिस्सा उड़ाया गया था। अब हुआ ये है कि बाकी हिस्सा जो उड़ा दिया गया है ये डायरेक्ट इन्होंने मिसाइल मारा। ये इजराइल की वो बेस थी जो हिफाजत करती थी ताकि पता चले कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया, कोई ड्रोन आ रहा, कोई मिसाइल आ रहा, कोई चीजें आ रही हैं। इसके बाद इसराइल के लिए इतनी तबाहकुन सूरत हाल हुई है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल हुई है कि अब वहां से जो ड्रोन्स आएंगे, रॉकेट्स और मिसाइल आएंगे, वो बिल्कुल ही नहीं रोके जाएंगे। आपका अगर डिफेंस सिस्टम पूरे का पूरा वीक हो गया, डिफेंस पोस्चर ही आपका वीक हो गया है, तो आप बताएं अब आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं। अब ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, रॉकेट आए, जो भी आए, इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा अहम है कि ये लिबनान और हिजबुल्लाह की जितनी एक्टिविटी उठती थी उसको फौरी तौर पर पकड़ता था और फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर मिसाइलों को रोकना होता था। और इसके अलावा जो इनके मिलिट्री ऑपरेशन होते थे, एयर डिफेंस सिस्टम के सपोर्ट होती थी ग्राउंड के ऊपर, यानी मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने ग्राउंड पर कोई चीज मूव करनी है, इनकी फौज ने, एयरफोर्स ने कोई चीज, तो वो पहले देखते थे कोई हमला तो नहीं आने वाला, तो यहाँ से मैरून एयर बेस से उनको ग्रीन सिग्नल जाता था, फिर वो आगे जाते थे। अब जब मैरून बेस ही उड़ा दिया उन्होंने, तो आप बताइए इनका पूरे का पूरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कंट्री की जो एबिलिटी होती है पावर की, मेंटेनेंस की, कि भाई कोई हमला होगा, वो तो ये रोक ही नहीं पाए। और इस सूरत हाल में आज जुम्मे की नमाज से पहले ही उन्होंने बेस उड़ा दी है और उन्होंने पैगाम दिया है कि हम जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले आपके लिए तोहफा। ये इजराइल के लिए अब तक का जितने हमले हो रहे हैं उनका सारे हमलों को अगर आप एक दफा साइड पर रखे, नॉर्दर्न की साइड से ये बहुत बड़ा आज उनका नुकसान हुआ है। पहले बेस जो उड़ाई गई थी असल में था, पहले मिसाइल आते थे तो ये रोक लेते थे, तो जब इन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर क्या चीज है जिसको हम उड़ा सकते हैं, इन्होंने मैरून बेस उड़ाई, उसके बाद उनको रिपेयर किया गया। अब वो करते करते अब उन्होंने जो उड़ा दी है उसका हिस्सा इस बार इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई है कि अब तो हम कोई चीज नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप घर छोड़कर चले जाएं, अब रॉकेट और कोई चीज आएगी तो डायरेक्टली हिट ही करेगी आगे, हम आपको रोक नहीं पाएंगे। अब मामला यहाँ पर इतना खतरनाक है, आप जरा देखिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी बड़ा इवेंट करवाना होता है या कुछ भी होता है तो ये मैगजीन आपको इशारे देता है। अब आप जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये कहता है कि एक वार्निंग गेम उन्होंने की है, उन्होंने कहा सीज फायर या आर्मेगेडॉन। ये बात आपने बड़ी अहम समझनी है। उन्होंने क्या पैगाम दिया? सीज फायर का मतलब क्या है कि जंग बंदी। आप सबने देख लिया नेतन्याहू कर रहा है जंग बंदी, किसी सूरत करता हुआ आपको नजर आ रहा है। उसने अपने लोगों के खिलाफ चला गया। आप देखिए, यानी जनाजे उठ रहे हैं इजराइल में, फौजों के घर वालों की चीखें देखे जरा, ताबूतों से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, अपनी फौज को बुरा भला कह रहे हैं, गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, कह रहे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे, तुमने सत्यानाश हमारा कर दिया, जनाजा हमारा निकाल दिया, हम किसी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद कहता मैंने जंगबंदी करनी नहीं। अब वो उसने क्लियरली कह दिया है कि अब जो लड़ाई होनी है हो जाए, ईरान ने हमला, बल्कि यहां तक वो चला गया है कि अगर ये हमला नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, यमन ने कहा कि वो बहुत बड़ा हमला करने जा रहे, इस्माइल हानिया के मरने का बदला वो पहले लेने जा रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा जी लिबनान अपना बदला लेगा, फवाद शुक्र का और इस्माइल हानिया का, और ईरान अपना बदला लेगा। अब सबने कहा जी अलग अलग लेने जा रहे हैं। यमन का जो हमला होगा वो इन सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया। अब आप सोचें कि जंग बंदी तो हो गई खत्म, अब अगला वर्ड आप पढ़ लें, आर्मेगेडॉन। ये क्या है?
ये दुनिया की जो आखिरी सबसे तबाहकुन जंग, जिसके बारे में तकरीबन तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि ये वो जो जंग होगी ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बना दे, और वो होने जा रही है। और ये नहीं पता कि इस जंग में आप हम में से कौन सलामत रहेगा, यानी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली हो सकता है मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हो, लेकिन उसके बाद ये आगे चली जाएगी। और ये कहां पर जाएगी, कितनी तबाही होगी, इसका अब हम अंदाजा नहीं लगा। अभी तो तबाही की शुरुआत है। अभी तो आप देखेंगे जो होना है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बहुत तबाहकुन है। अब ये सर पर खड़ी हुई है तबाही, और इस सूरत हाल के अंदर चीजें इतनी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, इतनी ज्यादा कि इसमें दोस्त भी रगड़े जाएंगे, दुश्मन भी रगड़े जाएंगे। जो पॉलिसीज के मतलब इजराइल को ये बात पता होती कि छोटे छोटे ड्रोन्स हमारी तमाम चीजें तबाह करें। देखिए आप इस सिनेरियो को ना देखें, उन्होंने लोग कितने मारे हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स कितनी तबाह की, गजा तबाही कर दी, और ये भी दुनिया के अंदर हो गया कि किसी की फौज ने बचाने के लिए नहीं जाना, ये भी तय हो गया, ये भी उन्होंने देख लिया। अब इजराइल के हाथ खुल चुका है। उनको ये लग रहा है कि अगर हमें कॉर्नर किया जाता है, यानी जंग तो रुकनी नहीं है, ये तो आप समझ लें, लेकिन अगर यमन के हमले में, लेबनान के हमले में या ईरान के हमले में किसी में भी हमारे शहर के शहर उड़ाए जा सकते, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो जर्नैल है इजराइल का, ये रिटायर्ड जर्नैल है, उसने कहा कि अगर 1 साल जंग आपने जारी रखी ना तो इजराइल कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी जाएगी, हमारे शहर उड़ा दिए जाएंगे, तमाम चीजें उन्होंने कहा कि होंगी। अब बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के जो जर्नैल अब उठ कर ये बात कह रहे हैं, तो जो खतरा सामने आ रहा है इनको नहीं पता, सबको पता है। तो सिनेरियो अब ये बना हुआ है इस वक्त कि ये सारे के सारे रगड़े जाने वाले हैं। अब इसराइल को ये लग रहा है कि अगर हमें कॉर्नर कर दिया गया तो फिर हम आखिरी मिसाइल चला देंगे। और इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली भी आएगा इसमें। उन्होंने कह दी थी हम आपके साथ खड़े हैं, और उसके अलावा छुपे हुए इस्लामिक ममालिक वो भी साथ खड़े हैं इसराइल के। तो आप बताइए कि फिर आपस में आपको जंग जो होती हुई नजर आ रही इतनी बड़ी, वो नहीं हो रही। ये जो बेस नहीं उड़ाई गई उनकी, असल में उनका दिफा कमजोर हो गया। अब उसके बाद जब वो बड़ा हमला करेंगे, मिसाइल मारेंगे, चीजें मारेंगे, जब वो डिटेक्ट, आपने कभी गौर किया है यमन ने एक ड्रोन मारा तेल अवीव पर लगा, वो टेस्ट था उनका डिफेंस सिस्टम। फिर इन्होंने कहा जी ह्यूमन एरर था, वो एक जी वो ऑपरेटर जो बैठा हुआ था उसको पता नहीं चला, यानी तेल अवीव के ऊपर यार खुदा का वास्ता है, यानी एक इंसान की गलती से सारा कुछ झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद मैरून बेस उड़ा दी गई, अब लेबनान से भी हमला, तो ये वीक हो गए। जब आप इनको कॉर्नर करेंगे तो दन ये आखिरी मिसाइल चलाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, दन आपको ये बात याद आएगी। पता नहीं उस वक्त तक दुनिया में कौन रहता है कौन नहीं रहता कि आर्मिगेडॉन, ये जो इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि लास्ट है, या तो अब सीज फायर होगी या फिर आर्मिगेडॉन होगा। तो सीज फायर तो होने नहीं वाली, तो फिर इसका मतलब है कि इन्होंने प्लान कर लिया दुनिया को तबाही का। सो वो अब कहानी आपके और हमारे सामने आ गई है, और यही वो सिनेरियो है जिसके लिए सारी दुनिया में वार्निंग जारी हो रही थी क्या होने जा रहा है। बिल्कुल हम एंड लाइन। In Israel's deserted north, where town after town lies empty. So the kibbutz were 1,100 people. There is today maximum 100. So it's a bit like a ghost town. It's a ghost town, yeah. One of the very few who've stayed behind, Eyal Dror showed us what the others have fled. 1,000 children. A direct hit on the high school in his kibbutz by a Hezbollah rocket. They hit it in noontime, in the time that the school normally open. You can see the damages here and Nearby a house, badly damaged by another. at that one. It sprayed it with shrapnel. Yes. Yeah. You can see the villages of Lebanon. And the enemy, just over the border, a mile away on higher ground. Maybe now there is a sniper standing there, just aiming. He's watching us. We are a mile from there. Like many Israelis, Eyal is hugely frustrated that Israel's been forced to evacuate so much of its own territory. I think it's a huge mistake. I do know that the IDF is striking Hezbollah and the IDF is causing damage. It is not enough. We could have done more in order not to normalize unnormal situation. Hezbollah has fired 7,500 rockets at Israel since October the 7th. Some intercepted, others, like this one, 2 days ago, getting through.
wrecking more homes and vehicles in these abandoned streets. The atmosphere in these deserted border towns is eerily quiet. There's a sense of fear, of course, that is caused by these regular rocket attacks and the damage they're doing, but also the knowledge for Israelis left behind that any one of these attacks could be the beginning of something much bigger, a full-scale Hezbollah retaliation that could lead to an even bigger war. 10 months after they abandoned their homes, 60,000 Israelis have not returned to the north. Among those who stayed on at a deserted shopping mall, we heard sentiments shared by many. It's bad, it's scary. We went to the shelters. Of course, they should have attacked Hezbollah a long time ago. There is mounting pressure on both sides of this border for escalation. An unstable and violent status quo has somehow held for 10 months, but could at any point still give way to a much wider war. Dominic Waghorn, Sky News, in the north of Israel. This Jewish rabbi reveals why Muslims are the actual chosen people and why it is impossible to defeat them. That the last and most difficult galus that Am Yisrael will face will be the confrontation with Yishmael. And this was said in the 1500s, and the Pirkei Rabbi Eliezer is even earlier. And he says Yishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. For Muslims, of course, this is nothing new. And even if our current state may make us think otherwise, the reality is that our deen, if we follow it correctly, gives us a winner's mindset, thanks to the reliance on our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. And that rabbi is well aware of that. Many Jews may delude themselves saying that Islam is not a real religion, but the learned ones know for a fact that we worship the Creator of the heavens and the earth with complete devotion and unsullied monotheism, even if the disbelievers hate it. Because Yishmael comes not only with physical brutality, but Yishmael comes with spiritual merits. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is a tznius. And the reason why the galus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There's no way to stop it. But is it even possible? Can any people counter the spiritual power of a ummah devoted to their Lord, who prays 5 times a day, remembers God, and honors all the prophets he has sent, without making any distinction? Can any people in the world claim that besides Muslims? On top of that, those who fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala believe in the promise of our victory or martyrdom, and both the victors and martyrs are honored after the battle. And this is why so many historical texts over the centuries relate the fierceness of Muslim fighters. There's no way to stop it, meaning there is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. What, they're threatened with death? Bring it on, gesundheit. That's what I want. But when you have people who don't care if they die, then how are you going to stop them? And the simple observation is why the most learned rabbis in the past and right now know the true worth of Muslims and recognize that they are not a force you can defeat in conventional ways. There's nothing you can do. So really, the statement of Rav Chaim Vital that Golus Yishmael is impossible to defeat by conventional military means, is even true on a simple political way. There's no way. You do your ishtadlus, but there's no particular way that you can guarantee anything. So the dilemma is we need spiritual ways of defeating them. And a simple observation of the world makes it clear that no nation can outclass Muslims in piety. And the presence of Muslims in the West is the only thing defending traditional values and lands where plots are put in place to destroy them. In short, Muslims should know that, like in the past, we can and will once again have the upper hand. The question we should ask ourselves is, do I want to be part of it by being more pious? Or will I let the honor to the future generations? For if we don't appreciate the blessings of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala can easily give it to a people who will appreciate it more.
यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर